Good morning, cute faces. Myself, Sarita Chaudhary, TGT science teacher from St. Joseph Public School, Tonk. Welcome, students, in a new methodology to study science. In this new method, students, we are going to use the books also. You can see book pages, your textbook pages on the screen. So, we will do the reading over here and along with it, explanation will be given to you. So, are you ready to study your science subject? I hope you are having your books with you, science textbooks. Open those science books and come to the page number, first page of chapter number 8, which is winds, storms and cyclones. So, here we are going to start with it, and first we will do the reading part, and wherever the explanation is required, that will be done. So, starting with the first statement, first sentence that says, Odisha was, we are reading over here that Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18th of October 1999. 1999 के अंदर 18th of October के अंदर एक cyclone था that hit the Odisha, and wind speed of that cyclone that was 200 km per hour. What is the meaning of this 200 km per hour? It means that in every hour the speed of wind was 200 km. It becomes very important to understand the first of all what is the meaning of this wind. Blowing air, what the wind is? Wind is the blowing air. When air blows in a particular direction, we call it as wind. तो विंड स्पीड कितनी थी उस टाइम वहाँ पे उस साइक्लोन की? इट वाज 200 किलोमीटर. ये एवरी आवर के अंदर इट वाज कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर. देन ड्यू टू दिस साइक्लोन 45,000 हाउसेज वर स्मैश्ड एट दैट टाइम. 45,000 जो है कम्प्लीटली वहाँ पे स्मैश हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, एंड अराउंड 7 लाख पीपल दे बिकेम होमलेस. 7 लाख पीपल के जब होम्स हाउसेज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो दे बिकेम होमलेस. On the same year, and the next cyclone hit the Odisha, that was on 29th of October. First it was on 18th of October, that after 10 days, 10 or 11 days, 29th of October को फिर से एक cyclone आया था. But this time the wind speed of that cyclone was 260 km per hour. And it was accompanied. What is the meaning of accompanied, students? If some events happen along with some actions, अगर कोई एक चीज़ हो रही है उसी के साथ में कोई दूसरा भी एक्शन हो रहा है, तो we use the term accompanied for that. So it was accompanied by water waves about 9 meter height. ये जो साइक्लोन था जिसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर, इसके साथ कुछ वाटर वेव्स भी थी जो 9 मीटर हाइट की थी, which is a good height, बहुत ऊंची हाइट होती है 9 मीटर. Thousands of people lost their lives that time also, and along with the lives, property worth crores of rupees was destroyed. The cyclone affected साथ में lives के साथ, people lives के साथ, और किस चीज़ को affect किया cyclone ने? These were the agriculture, transport, communication sources and electricity supply. They also got severely damaged due to this cyclone. You can see figure 8.1, students. It says, it shows the picture of image taken by a satellite of a cyclone approaching the coast of Odisha. ओडिशा के कोस्ट पे जो साइक्लोन आया था उसकी एक सैटेलाइट से ली हुई एक इमेज शो कर रहा है ये. एंड इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इट कैप्चर्ड दिस पिक्चर. And what the meaning of meteorological department? This is the government agency, government department, which keeps a record of weather report, or it also shows the prediction अपकमिंग डेज के अंदर, मंथ्स के अंदर वेदर कैसे होने वाला है, उसके लिए प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणी ये करते हैं. एंड साथ में वेदर रिकॉर्ड जो है वेदर रिपोर्ट्स का, उसको भी ये मेंटेन करते हैं. सो इन दिस पैराग्राफ वी स्टडीड अबाउट दी सम नेचुरल डिज़ास्टर. हमने यहाँ पे एक साइक्लोन की बात की है कि कैसे उसने कितने सारे लोगों की लाइफ्स को अफेक्ट किया था. Coming to the right hand side of the same page, but what are cyclones? How are they formed? Why are they so destructive? Destructive means why they cause a lot of damage, and in this chapter we shall seek answers to some of these questions.
तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर में आगे मिलने वाला है, वहीं पे हम एक्सप्लेनेशंस कर लेंगे. वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर बिकॉज दिस चैप्टर्स नेम इज विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स एंड दिस कंप्लीट चैप्टर इज बेस्ड ऑन द एयर. एयर के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है. तो वी आर गोइंग टू स्टडी सम ऑफ द एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द एयर and these activities they will clarify some basic features concerning a cyclone. साइक्लोन के बारे में, स्टॉर्म के बारे में हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. एंड हियर कम्स द डेफिनेशन ऑफ विंड इन योर टेक्स्ट बुक. मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड. मूविंग एयर in a particular direction, it is called as the wind. So we are now studying the article 8.1, that is the air exerts pressure. हम ये article यहाँ पे study करने वाले हैं. In this article, what kind of activity we are going to conduct? Whenever study, let's read first of all what is written in this box first. Whenever an activity involves heating, be very careful because students, you are not so grown up, you are just in 7th standard. तो जो आगे हम एक्टिविटी स्टडी करने वाले हैं, दैट मीन्स दे इन्वॉल्व हीटिंग. उनमें हीट हमें यूज़ करनी पड़ेगी, फ्लेम फायर हमें यूज़ करनी पड़ेगी. सो हीट शुड ऑलवेज बी हैंडल्ड विद द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स. लाइक यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर सिबलिंग्स. घर पे बड़े भाई बहन हैं और मदर फादर, ग्रैंड फादर और मदर, you can take their help to conduct these activities at your home. So starting with the activity, what this activity says, in this activity students, we need to boil water in the following activity. हमें यहाँ पे क्या करना है, water को boil करना है. How? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ टिन कैन. हमें एक टिन का कैन यूज़ करना है, जैसे हम जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के मार्केट से परचेस करते हैं. टिन कैन, एम्प्टी टिन कैन यूज़ करेंगे विद अ लिड. फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विद वाटर. इसको हमें वाटर से हाफ फिल करना है. हाफ ऑफ द स्पेस शुड बी लेफ्ट एम्प्टी. हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स. अब कैसे पता चलेगा हमें कि वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है? यू ऑलवेज ऑब्जर्व सम टाइनी बबल्स अराइजिंग फ्रॉम दी बॉटम ऑफ द कंटेनर. जहाँ पे वाटर का बेस है वहाँ से आप देखेंगे कुछ छोटे छोटे वाटर के बबल्स निकलते हुए हमें दिखाई देते हैं, एयर बबल्स. एंड आफ्टर रीचिंग टू द सरफेस, जब ये वाटर की सरफेस पे पहुँचते हैं तो आपको वो वाटर बबल्स जंपिंग करते हुए दिखाई देते हैं. तो वी गेट टू नो कि वाटर हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है. लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स. हमें कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए इस वाटर को बॉयल करना है. एंड ब्लो आउट दी कैंडल. और उसके बाद इमीजिएटली हमें कैंडल को ब्लो कर देना है. इमीजिएटली पुट द लिड tightly on the can and be careful in handling the hot can. Put the can carefully in a shallow metallic vessel or a wash basin. Pour fresh water over the can. What happens to the shape of the can? तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि हमें क्या यूज़ करना है. Coming to the next page, which is the page number 81. Just look at this diagram, figure 8.2 को आप देखिए. कैन विद हॉट वाटर बीइंग कूल्ड. हमने यहाँ पे एक कैन यूज़ किया है, हैविंग लिड. इट इज़ कवर्ड विद अ लिड एट द टॉप. इसमें हाफ हमने इसको वाटर से फिल किया था एंड इसको हमने फ्लेम के ऊपर रखा है, बर्नर के ऊपर रखा है टू बॉयल इट अप. एंड जैसे ही वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया, हमने लिड से कवर कर दिया, फ्लेम को टर्न ऑफ कर दिया एंड इमीजिएटली वी पोर द कोल्ड वाटर ओवर इट. या हमने सिंपली इसको वॉश बेसिन में रख दिया है अंडर अ टैप वाटर. तो जैसे ही इस पे कोल्ड वाटर जाता है, व्हाट वी आर गोइंग टू सी, वी विल सी दैट दिस कैन, इट विल गेट कोलैप्स. ये पूरा पिचक जाता है, अच्छे से कोलैप्स हो रहा है, इसकी शेप जो है वो डिस्टॉर्टेड हो रही है. तो द क्वेश्चन अराइजेज स्टूडेंट्स दैट व्हाई डज दिस हैपन. ऐसा क्यों होता है इस केस के अंदर? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द 3 states of matter. There are 3 states of matter. You must have studied about it in your junior classes also. These are solid, liquid and gas. If we talk about solid, all the particles in the solid, they are tightly packed with each other, right? These are the pictures of particles. अगर हम show करेंगे particles बिल्कुल tightly packed हैं. What about the liquids? In the liquids, these particles, they have some space in between them. उनके बीच में थोड़ा space होता है, which is called as interparticle space. And in case of gases, this interparticle space is maximum. Particles के बीच में बहुत सारा empty space already present रहता है.
So in this activity which we discussed right now, we boil the water. That means water is the liquid state of matter. तो हमने liquid को boil किया है. And whenever liquid is heated, there is the formation of steam. वहाँ पे स्टीम का फॉर्मेशन होता है, वेपर का फॉर्मेशन होता है. एंड वेपर इज द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, राइट. तो जैसे ही हमने दिस टिन कैन, इट वाज हाफ फिल्ड विद वाटर, इसको हमने वाटर से हाफ ही तो फिल किया था एंड इसको हमने बॉयल करना स्टार्ट किया. तो इससे क्या रेज हो रही है, वाटर वेपर का फॉर्मेशन होगा. एंड दैट गैसियस स्टेट ऑफ वाटर वेपर, इट ऑक्यूपाइड दिस स्पेस. ये जो ऊपर एम्प्टी स्पेस है सारा उस वाटर वेपर ने ऑक्यूपाई कर लिया. But as soon as the gaseous state of matter is condensed, यहाँ पे हम term use कर रहे हैं which is condensation. What is the condensation? Whenever gaseous state of matter or vapor state of matter, it gets cool down. On cooling, gaseous state converts into the liquid state. Gaseous state liquid state में convert हो जाती है and this process is called as condensation, students. So जैसे ही हमने इसके ऊपर cold water pour किया तो ये जो ऊपर gaseous state थी, जो vapor थी, उसका क्या हो गया, condensation हो गया and resultantly it got converted into the liquid state. तो लिक्विड में तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता नहीं है, दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस, और कम स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं. तो जितने भी यहाँ पे वेपर प्रोड्यूस हुई थी वो सारी वेपर लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है एंड उसने वहाँ पे वो स्पेस जो था फिर से कैसा हो गया, एम्प्टी हो गया. एंड बिकॉज ऑफ दिस एम्प्टी स्पेस, जैसे ही हमने इसके ऊपर कोल्ड वाटर पोर किया वो कम्प्लीटली क्या हो रहा है, कोलैप्स हो जाता है. Let's see what is explained in your NCERT book. बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है. Can you guess why the shape of the can gets distorted? क्यों उसकी shape distort हो गई? If you cannot get a tin can, take a soft plastic bottle. अगर हम plastic bottle से भी experiment show करते हैं तो same results we are going to observe. Fill it with the hot water, empty the bottle and immediately cap it tightly. Place the bottle under running water. Recall now some of your experiences when you fly a kite. तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं हमें इस फिगर 8.2 इस एक्टिविटी के साथ साथ उनको भी डिस्कस करते हैं एंड देन विल सी द कंक्लूजन ओवर है, रिजल्ट क्या आता है. सो हियर वी आर आस्क्ड टू यूज to recall the experience of flying a kite. When you fly a kite, does the wind coming from your back help? तो जब भी हम fly करते हैं kite को तो we always take care of the wind direction, कि wind की direction क्या है, because wind is something which helps the kite to fly high and high in the sky. If you are in a boat, जब हम boating करते हैं, it is easier to row it if there is a wind coming from behind you. अगर पीछे से wind direction है हमारे opposite direction के अंदर, तो wind क्या करती है, boat को sailing में help करती है, rowing में help करती है. Do you find it difficult to ride a bicycle against the direction of the wind? Just imagine that I am just riding my bicycle in this direction, right? And wind is coming in this direction. बहुत तेज wind blow हो रही है इस direction के अंदर. So that wind is going to exert some pressure on my body as well as on the bicycle also. So that will prevent the easy movement of that bicycle in the front direction. वो उसके मूवमेंट को क्या करती है, अपोज करती है, रोकने की कोशिश करती है. नेक्स्ट एक्सपीरियंस इज, यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाइसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट. तो जितने भी ये व्हीकल्स की ट्यूब वगैरह होती हैं, टायर ट्यूब्स, उनमें जनरली क्या करते हैं, एयर फिल करते हैं. सो ऑन फिलिंग द एयर, जस्ट इमेजिन दिस इज अ टायर, राइट, ये टायर ट्यूब है. तो इसके अंदर जब एयर फिल होगी तो एयर की वजह से कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगा. एंड दैट एयर विल अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ दिस टायर ट्यूब. वो जो एयर है वो दोनों डायरेक्शन में, इन द इनर डायरेक्शन एंड द आउटवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में क्या कर रही है, इस पर प्रेशर अप्लाई कर रही है. एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर दिस टायर ट्यूब बिकम सो हार्ड, बहुत हार्ड हो जाती है एंड इट कैन ईजिली रोल ऑन द सरफेस, वो ग्राउंड पर रोलिंग कर पाता है. So you know that a bicycle tube overfilled air with air may burst. अगर बहुत ज़्यादा air fill कर देते हैं इसके अंदर तो because of that air pressure it may burst also. Next, discuss with your friends how the air in the bicycle tube keeps it in the shape. So we have already discussed that air pressure in this tire tube with the help of this diagram, students.
All these experiences they show that the air exerts pressure. Here comes one statement कि जहाँ पे भी air present रहती है वो air क्या apply करती है, pressure apply करती है. All the three states of matter actually apply the pressure, whether it is the solid or it is the liquid or it is the gaseous state of matter. इनमें से कोई भी state होगी, चाहे वो gas हो, liquid हो या solid हो, तीनों ही pressure apply करते हैं. But solid it always apply the pressure in the downward direction. Solid हमेशा नीचे की तरफ pressure apply करता है. And the liquid it always apply the pressure in the downward direction and in the sideways also, in which the container it is poured. But gas being having the maximum space, इसके particles बिल्कुल free होते हैं motion के लिए, so they apply the pressure in all the directions. ये हर direction के अंदर gaseous particles pressure apply करते हैं. It is due to this pressure that the leaves of the trees, banners or flags flutter when the wind is blowing. So you must have observed trees, leaves of trees fluttering when air is blowing with a very high speed. जब wind speed बहुत high होता है. You can list some more experiences which show that air has pressure. So let's now try to explain why the can or the bottle gets distorted. As water is poured over the can, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे हमने कैन के ऊपर वाटर पोर किया था तो क्या होता है यहाँ पे, some steam in the can condenses. That we have already, you already got this answer. हमने कंडेंसेशन की बात की थी कि जो वाटर को बॉयल किया तो वहाँ पे स्टीम का, वाटर वेपर का फॉर्मेशन हुआ, और जैसे उस पर हमने कूल वाटर पोर किया तो कूलिंग से उस वेपर स्टेट का क्या हुआ, वो कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में वाटर में चेंज हो गई, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड इट. तो अर्लियर नीचे यहाँ पे वाटर प्रेजेंट था, उस वाटर ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में साइड वेज में प्रेशर अप्लाई कर रखा था. हेयर वॉज द एयर ने इन ऑल द डायरेक्शंस, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन द साइड वेज एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एयर ने प्रेशर अप्लाई किया. बट जैसे ही वो एयर कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, नाउ इनसाइड दिस एम्प्टी स्पेस देयर इज नो प्रेशर, यहाँ पे कोई भी प्रेशर प्रेजेंट नहीं है, बट द प्रेशर ऑफ एयर इन आवर सराउंडिंग दैट इज वेरी हाई. So because that air pressure from the surrounding, this tin can it got distorted, इसकी जो collapse हो गया था completely. The pressure of air inside the can decreases, then the pressure exerted by the air from outside the can, as a result the can gets compressed. This activity again confirms that air exerts pressure. So that's all for our today's video, students. You learned that how air exerts pressure with the help of this activity of कैन, मेटल कैन की हेल्प से हमने समझा इस चीज़ को. वी गॉट टू नो अबाउट द कंडेंसेशन ऑल्सो. सो नाउ इट्स अ टाइम टू गेट योर होमवर्क. नोट डाउन few questions, students, and these questions answers you are supposed to submit as your homework. The first question is, with the help of an activity, with the help of an activity, prove that air exerts pressure. So I believe that you will be able to answer this question after getting explanation, detailed explanation. And the question number 2 is, define wind. You are supposed to give definition of wind. So that's all for today's class, students. You got 2 questions to submit as your homework, and explanation is being done. So submit your work as soon as possible, students, right? And here we wind up our today's class. Take care and always submit your work on time, students, right? कभी भी आपको अपना वर्क डिले नहीं करना. ऑन द रेगुलर बेसिस यू हैव टू सबमिट योर वर्क. एंड टेक केयर. आई होप दैट यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ इन दिस COVID-19 सिचुएशन. एंड डोंट हैम्पर योर स्टडीज, स्टूडेंट्स. कीप डूइंग योर स्टडीज प्रॉपरली ऑन द रेगुलर बेसिस. टेक केयर. सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग.